हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फेस पे भी कुछ नहीं लगाया, मैं सिर्फ फेस वॉश करके आई हूँ। और मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं लगा रही हूँ जॉनसन्स की बेबी फेस क्रीम। छोटा सा अमाउंट ले लेके मैं स्पॉट्स बनाऊंगी और अपने फेस पे अच्छे से जेंटल मसाज करूँगी। For my lips, I'm using this N by Bay lip balm. Next, I'm using this primer from NMM. और इसका एक छोटा सा अमाउंट लेके मैं अपने फेस पे मसाज करूँगी, स्पेशली अपने ओपन पोर्स एरिया पे। For my eyebrows, here I am using this Music Flower Gel Eyeliner in shade Brown. Next I am using this spoolie ताकि मेरे eyebrows में जो जेल है वो evenly spread हो जाए और hairs comb हो जाए। Next I am using this s.f.r concealer in shade Pale Yellow. और इसे ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को नीट करूँगी और अपनी आईज पे भी यही अप्लाई करूँगी ताकि अनइवन टोन जो है वो कवर अप हो जाए। Next I am using this damn beauty blender to blend out my concealer evenly. Now here I am applying this foundation from brand Lakme Absolute in shade 2. Here I am applying this foundation with the help of this foundation brush. Now I am blending this foundation with damn beauty blender. Don't forget your neck area. Here I am using this Teen.Teen concealer stick for my under eye area. और कंसीलर एरिया के लिए भी मैं सेम कंसीलर स्टिक ही अप्लाई करूँगी। My contouring I am using this NY Bay contouring stick. शेड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। For my powder contouring, here I am using this s.f.r deluxe kit 3-in-1. Now I dust off my translucent powder. For today look, I apply this brown eyeshadow on my fluffy or blending brush. This makeup look is very easy peasy or helpful for everyone. Now I pick the pink eyeshadow on my small flat brush for my lid area. Now I merge my both eyeshadows with this clean blending brush. Here I am using this pencil brush for my translucent shade in my under eye area. Now I pick the same pink eyeshadow on the same pencil brush for my lower lash line. Now I apply the pressed
glitter in shade pink. You can use any brand. Which one you have? For my liner, I applied this NYB liquid eyeliner in shade black. Here I am using this Wet n Wild nude kohl kajal or kohl pencil, you can say. Here you can see the difference in my both eyes. Now my favorite step. Here I am using this Bonjour Paris mascara 5x volumizing. My eye makeup is almost done. Now I am using this blusher from same palette s.f.r Girl Deluxe Kit. For my highlighter, I am using this Glam highlighter from brand Colors Queen in shade 04. For my cheek, I am using this pink highlighter. For my leftover entire face, I am using this golden highlighter. My makeup is almost done. Here you can see my final result. For my lips, I am using this Eye Amsterdam lipstick in shade Dellenberg 7. If you like my video, then don't forget to subscribe my channel and press the notification bell icon for updates. Thanks for watching.